Hello, hello. Okay, fine. So let's start today class of the region of convergence of jet transform. Okay, we have already derived the jet transform of the various type of signal, and comfortably we have already discussed some property of the jet transform in the previous class. So today we are going to discuss about the region of convergence of the jet transform. Okay. So how we can find out after the jet transform of any signal, what is the region of in jet transform for that particular signal? Okay, so just we are going to discuss about the region of convergence for the various point are consist in the region of convergence. So we are going to discuss one by one. Okay, so just let's share the screen and then we will continue our discussion. So, okay. So region of convergence. So today we are going to discuss about the region of convergence of the jet transform. Okay. So first we try to hear region of convergence of jet transform. Region of convergence of convergence of jet transform of jet transform. Okay. So that will be maybe in short way we just indicate by ROC. Okay. So we have to consider some point when we are going to find out the region of convergence of jet transform. In any particular signal xn, we have already discussed how we can find the jet transform, and after the jet transform, how we can find out the region of convergence. Okay. So just we have to consider here some basic point. That means you have to identify, sorry, you have to identify here. That means basic point you have to keep in your mind. Suppose that the ROC in jet transform is indicated as circle contains a unit circle. That means ROC तुम्हारा indicate कर रहा है as a circle which contains the unit circle. That means unit circle means radius of one. Okay. So first point we have to note it here. Suppose that we just try to now the ROC ROC in jet transform, ROC in jet transform is indicated as circle is indicated as circle indicated as circle contains a unit circle.
contains a unit circle. Okay, unit circle, that means radius 1 circle, unit circle. Okay. Next one, if a signal xn is a right-sided sequence, if a signal xn is a right-sided sequence and if mod z equal to r in the ROC, then all finite value of z for which magnitude of r greater than magnitude of z greater than r will be the ROC. Okay. So second point is your if xn, if xn may be right sided, left sided, or both sided. Signal may be any types. That means either right sided signal or maybe left sided signal or maybe both left sided and right sided. So if xn is a right sided sequence, if xn is a right sided sequence, if xn, second point is your if xn is your right sided signal, xn is right sided signal, right sided signal, and if magnitude of r equal to the magnitude of z equal to r, and if magnitude of z equal to r, magnitude of z equal to r. So how we can write just magnitude? In simple way, magnitude of z equal to r. So just how we can write the magnitude? From this equation we are able to write down magnitude of z equal to magnitude of z equal to r, magnitude of z equal to r in the ROC, in the ROC, then all finite value of z for which, then all finite value of z, for which
magnitude of Z greater than R, magnitude of Z means magnitude of Z greater than R, there is a greater than R, greater than R will be the in ROC, will be the in ROC, in ROC. Okay. So how we can just elaborate this statement? If Xn identify already that means if Xn is right-sided signal and you have to find out magnitude of Z equal to R from the denominator, that R you have to draw the circle with radius R, okay, and the region of convergence is for all finite value of magnitude of Z, all finite value of Z for which the Z transform we have already find out. So for all finite value of Z, that means magnitude of Z is greater than R will be in the region of convergence. Okay. So if you draw the circle, that means with first one is your at magnitude 1, you have to draw the circle with 1 as your radius and origin as your center. Okay. Next you have to point it out the pole at R. That means you have to put you have to identify already that signal is right sided, so we find locate the pole at R, and with this R consider as a radius and draw the circle. So the region of convergence is your greater than magnitude of Z equal to R. That means outside of the circle R, okay, is the region of convergence for this right sided signal. Okay. If we second point consider that if the signal is left sided, then what is the magnitude of Z value for the finite value of Z transform? Just we try to see that statement. If Xn is a right sided signal, if Xn is right sided signal, if Xn is right sided signal, sorry, is left sided signal, left sided signal, sided signal, and if magnitude of R, magnitude of Z equal to R, and magnitude of if and if magnitude of Z equal to R, if magnitude of Z equal to R
magnitude of Z equal to R in the ROC, that means the region of convergence, ROC, then all finite value of Z, then all finite value of Z for which magnitude of Z less than R, for which magnitude of Z less than R will also be in ROC. Magnitude of Z so just write down the magnitude of Z here. Magnitude of Z less than R will also be in ROC. Okay. Will also be in ROC. In ROC. Okay. ROC. Next one, if xn is two-sided, that means here we have discussed xn either right-sided or left-sided. If the signal xn are both-sided, that means positive and positive as well as in negative. That means minus infinity to infinity. Here they define a particular signal that is known as the two-sided signal. Okay, so if xn is two-sided signal, if xn xn is two-sided signal, xn is two-sided signal, and if magnitude of Z equal to R, that is from the denominator part, you find out the number of poles from the denominator parts, that is magnitude of Z equal to R. Okay, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोल फाइंड आउट कर सकते हैं, Z ट्रांसफर जो पर्टिकुलर सिग्नल दिया हुआ है उसका पोल फाइंड आउट करने के बाद magnitude of R, circle is in ROC, so two-sided signal, and if magnitude of Z equal to R, magnitude of Z equal to R magnitude of Z equal to R
circle is in ROC. Circle is in ROC. Then the ROC will contain a ring. Then the ROC will contains will contain a ring in Z plane, a ring in Z plane that include magnitude of Z equal to R. Okay. That include magnitude of Z equal to R. Magnitude of Z equal to R. Magnitude of Z equal to R here. Okay. Z equal to R. Magnitude of Z equal to R. Next one is if the Z transform of Xn is rational, if the Z transform of Xn, Z transform of Xn is rational, then its ROC is bounded by pole or extended to infinity. Okay, then its ROC is bounded by poles, या किसी बॉन्ड पोल के थ्रू बाउंडेड रहेगा, और मे बी एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी, is bounded by pole or extended to infinity. Okay, or extended to infinity. Extended to infinity. Fine. So, and next point is if the Z transform of Xn is rational and right-sided, then how just we can find out the region of convergence. Just we try to see that point. Okay, if the Z transform of Xn, if the Z transform of Xn is rational, nice.
if the jet transform of Xn is rational and right-sided signal, Xn is rational and right-sided signal, is rational and right-sided signal, then ROC in jet plane, then ROC in jet plane in jet plane is outside the outermost pole. That means जो last pole है उसके outside. Okay. Then is outside the outermost pole. Okay. Outermost pole. Most pole. Okay. So if the jet transform of Xn is rational and right-sided signal, then the ROC in jet plane is the outside the outermost. Different type of यदि pole है तो last जो pole है उसके outside होगा, नहीं? Okay. And next point is your if the jet transform of Xn is rational and left-sided signal, if the jet transform of Xn is rational, of Xn is rational, Xn is rational and left-sided signal is rational and left-sided signal then ROC in jet plane is then ROC in jet plane is in jet plane is inside the innermost pole, is inside the innermost pole, innermost pole. Okay, that means you have to
keep in your mind when you are going to find out the region of convergence of jet transform, then first of all you are able to identify the which type of signal in time domain. That means either left-sided, right-sided, or both-sided, or maybe rational right-sided or rational left-sided. According to that, you are able to find out the region of conversion of that particular signal. Okay, so now we just try to elaborate all these points one by one. So just how we can draw the, suppose that first point is too much easier, since the ROC in jet transform is indicated as circle. Okay, so indicated as circle contains a unit circle. So just this one is very simple. Just you have to draw the jet plane and just origin as a center, and at radius 1 you have to draw the circle. Okay, so in that unit circle you have to contain the jet transform. Now suppose that we want to explain this one second point. That means if we are able to identify the signal is xn is right sided signal, then जो उसका मैग्नीट्यूड होगा जेड का दैट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जनरल वे में हम लोग लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू आर. हो सकता है क्योंकि आर का कोई पर्टिकुलर वैल्यू रहे, न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट मींस 2 3 4. सो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू आर डिनोमिनेटर से फाइंड आउट करना है. दैट मींस वहां से क्या हो जाएगा, पोल मिल जाएगा उस जेड ट्रांसफॉर्म का. ठीक है, यदि सपोज करो नीचे में जेड -3 है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 3. सो द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड, जेड के ऑल फाइनाइट वैल्यू के लिए ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर. ओके, फाइनाइट वैल्यू. सो जस्ट यदि सपोज करो कि न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे कितना है, आर की जगह 3 है, दैट मींस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 फॉर द राइट साइड सिग्नल के लिए. ये ध्यान में रखना है हमेशा. ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ यू explain this point with draw this circle. So just we try to liberate this point from one by one. All the point we will discuss here. Suppose that, okay, so yeah, so just show this point. Yeah, it is clearly visible. So what is the statement of second point? Second point क्या था, यदि xn का z ट्रांसफॉर्म z बाय z माइनस आर हो रहा है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, r. दैट मींस ये हम लोग क्या किए, z प्लेन ड्रॉ कर लिए पहले, इसको ओरिजिन को यहाँ पे इंडिकेट किए, और 1 पे दैट मींस यूनिट सर्किल यहाँ पे 1 है. ठीक है, इस पॉइंट पे 1 है, तो इस 1 को रेडियस मान के हम लोग सर्किल ड्रॉ कर दिए. ठीक है, इसको पहले ड्रॉ कर दिए. अब इसको ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या किए, एट z इक्वल टू आर जो पोल है उसको रेडियस मान के हम लोग क्या किए, एक और सर्किल ड्रॉ किए. दैट मींस एट विथ रेडियस आर वी हैव जस्ट ड्रॉ वन सर्किल. सो दिस वन इज another circle at radius r. Okay, since this signal is right sided, so the region of convergence is your outside of the value of r. So I have already mentioned this point in a statement. That means region of convergence contains the magnitude of z equal to r. Okay, that means in place of r maybe any numerical value, कोई भी numerical value हो सकता है उसकी जगह पे. ठीक है, इसी तरह से हम लोग सेकंड पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. यदि कोई सिग्नल लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, दैट मींस u -n-1 या u -n-2, these signal are left sided signal. Okay, so these signal are left sided signal. If you find out the z transform of this one, so just similarly z by z -1. Okay, or if we consider a to the power n u -n-1. Okay, so
this one is your left-sided unit step signal. If you multiply any signal, that is left-sided. Okay, so a to the power n u minus n minus 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? z by z minus a, z ट्रांसफॉर्म. Okay, z by z minus a हो जाएगा. Since this signal is left-sided signal, so you have to just draw the one circle at radius 1, another circle at radius a. Okay, so just I have draw the another circle at radius a at this point. Here indicated the pole. So for this one, since it is a left-sided signal, so region of convergence is magnitude of z less than e. So just you maybe find out here, from all the region of convergence is less than a. That means this region indicated by the arrow. Okay, so region of convergence is less than a. Is it clear to all of you? Hello. Okay, so just we can explain next point. So this is your, for the left-sided signal, that means the region of convergence is your left side of less magnitude of z is your less than e. Similarly, we can fourth point, that means is your two-sided signal. Okay, suppose that xn is your two-sided signal. So the region of convergence is contains a ring. Okay, so for that statement we consider here two signal a to the power n un minus a to the power n u minus n minus 1. Okay, this signal is your both-sided signal. So the z transform of a to the power n un, इसको यदि हम लोग और स्पेसिफाई कर लें, एक जगह हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं, सपोज दैट 2 to the power n un and here minus 3 to the power n u minus n minus 1. okay, तो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? a to the power n un का कितना होता है? z by z minus a, तो ये कितना है यहाँ पे 2, यही ना. और इसका भी z ट्रांसफॉर्म कितना होगा? माइनस a to the power n u minus n minus 1 का भी z ट्रांसफॉर्म कितना होता है? z by z minus a. तो यहाँ पे a की जगह कितना है वैल्यू, ये देखना हम लोग को. a के जगह पे यहाँ पे वैल्यू कितना है? 3. तो इसका हम लोग सबसे पहले रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना चाहिए. इसके लिए इसका z ट्रांसफॉर्म कितना हो रहा है? z by z minus 2. तो यहाँ से हम लोग डिनोमिनेटर का जो पार्ट है उससे पोल का पोजीशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे. दैट मींस z minus 2 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो z इक्वल टू कितना हो गया? 2. सिंस दिस इज योर राइट साइडेड सिग्नल, when is your positive sided signal. Okay, this one is your positive sided signal, that means the right sided signal. So the region of convergence is your magnitude of z for which this value is finite. किस वैल्यू पे आएगा? z के किस वैल्यू के लिए फाइनाइट आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ z ग्रेटर देन 2. नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ z ग्रेटर देन 2 के लिए ये फाइनाइट आएगा. तो एक हम लोग सर्किल क्या करेंगे? रेडियस 2 पे ड्रॉ कर लेंगे. फर्स्ट तो 1 पे हम लोग यूनिट सर्किल ड्रॉ कर ही लिए, ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे? 2 को रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे. देखो 2 को मान करके रेडियस एक सर्किल ड्रॉ किए, ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड वाला के लिए. तो सेकेंड वाला क्या है? 3 to the power n u minus n minus 1. okay, u minus n minus 1. so इसका z ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा? z by z minus 3. ओके, डिनोमिनेटर में यदि इसका z minus 3 इक्वल टू पुट करते हैं 0, तो कितना आ जाएगा? z इक्वल टू 3. तो पोल कहाँ पे होगा इसका? 3 पे. तो क्या करेंगे? 3 को रेडियस मान करके एक अगेन सर्किल ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लिए. अब देखना है कंबाइंड सिग्नल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो.
तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखो फर्स्ट वाला केस के लिए कितना आ रहा था, जेड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 इस रीजन में यहाँ से जाएगा, आउटसाइड इधर से जाएगा, जो रेडियस 2 पे ड्रॉ किया उस सर्किल के आउटसाइड जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 इसके लिए। और इसका वाला के लिए क्या करा, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड लेस देन 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड 3 पे कहाँ पे सर्किल ड्रॉ किया, यहाँ पे, इसका किधर जाएगा, इधर जाएगा, इनसाइड लेफ्ट साइड, inside the circle, okay, so less than 3 इस तरह से होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो कॉमन रीजन कौन सा मिला दोनों के लिए, जेड ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, जेड लेस देन 3, इस दोनों का कॉमन कॉम्बिनेशन हम लोग को रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देगा। तो कॉमन कौन सा होगा, जो 2 और 3 के बीच में रीजन है, दैट मीन्स 2 और 3 के बीच में जो रीजन है, ओके, 2 और 3 के बीच में, दैट मीन्स ये वाला रीजन जहाँ पे कट सेट को अभी हम मूव कर रहे हैं, ओके, ये रीजन क्या होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दिस कंबाइंड सिग्नल के लिए, ओके। सो दिस इज योर फॉर बोथ साइडेड सिग्नल एग्जांपल, ओके, एंड रीजन इज योर इन सर्किल, सो दिस वन इज योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस of circuit 2 to 3, okay. So z is less than magnitude of z less than 3, ये हो जाएगा तुम्हारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो दिस इज योर, एंड लास्ट 2 पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वेयर, दैट मीन्स द रैशनल सिग्नल इज, यदि रैशनल सिग्नल है, सिग्नल इज योर रैशनल, देन that means this one is bounded by a pole or maybe extended to infinity। और यदि रैशनल सिग्नल राइट साइडेड है, दैट मीन्स क्या होगा, आउटर मोस्ट। तो इस पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम अलग से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसी में हम जो सो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सेकेंड लास्ट सेकेंड पॉइंट, दैट मीन्स इफ दिस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सएन इज ए रैशनल एंड राइट साइडेड सिग्नल, देन द आरओसी इन जेड प्लेन इज आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल। तो यहाँ पे यदि हम लोग कंसीडर करते हैं कि 2 पोल है, ठीक है, 2 और 3, ठीक है, तो यदि ये रैशनल है और राइट साइडेड सिग्नल है, तो क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आउटर पोल जो मोस्ट है, आउटर मोस्ट पोल ये वाला है ना, तो आउटर मोस्ट पोल के बाहर जाएगा, दैट मीन्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इधर जाएगा, ठीक है, आउटर मोस्ट पोल के इधर जाएगा। आउटर मोस्ट पोल इस सर्किल के लिए कौन सा है, 1 2 3 का 3, तो आउटर मोस्ट जाएगा 3, ठीक है। और यदि लास्ट पॉइंट का हम लोग कंसीडर करें कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सएन इज रैशनल एंड लेफ्ट साइडेड सिग्नल, देन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज योर इनर मोस्ट पोल होगा, दैट मीन्स ये 2 यदि है यहाँ पे, तो इधर जाएगा इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इधर जाएगा, ओके। सो this is the region of convergence for the innermost pole, okay. So is it clear to all of you? So you have to keep in your mind when you are trying to region of convergence of the jet transform. If you have remember this point, then you are able to find out the region of convergence, okay. So just we stop here today, and in the next class we will discuss another thing, okay, another things. So, okay, fine. So let's we stop here, and we will discuss in the next class. Okay, thank you.